press reporter journalist forcefully entered into the school premises and started taking photographs of the girls and lady teachers who were there attending the prayers. My lord, they objected. One of the lady teachers snapped a photograph of the complainant and subsequently he was shown the door. A complaint to this entire incident was made. Number 2, Sri Mantosh Misra, 2.1, Kiran Ketia. My lord, this is an appeal under section 14A of S. My lord, my application under section 438 was rejected on the ground that it is barred by the amendment incorporated by 18. Section 18 of the SC/ST provision of atrocity act. My lord, I relied upon the judgment of Honorable Apex Court in Prithviraj Chauhan versus Union of India, which clearly says in para 10 concerning the applicability of provisions of section 438 CRPC that shall not apply to the cases under Act of 1989. However, if the complaint does not make out a prima facie case for applicability of provisions of Act of 1989, the bar created under 18 and 18A1 shall not apply. बताइए ना क्या facts हैं case के? My lord, the applicant is acting principal of a high school. My lord, the entire chain of incidents started on 9th of September 22. My lord, at about 10:14 AM, the complainant, claiming himself to be a press reporter journalist, forcefully entered into the school premises and started taking photographs of the girls and lady teachers who were there attending the prayers. My lord, they objected. One of the lady teachers snapped a photograph of the complainant and subsequently he was shown the door. A complaint to this entire incident was made by the students to the present applicant, which he was forwarded to police chowki, the concerned police chowki, and as well as the district education officer. After that, my lord, for 6 days nothing happened. On 15th, DEO forwarded the same complaint which was made by the applicant to the superintendent of police कि इसमें आगे कार्यवाही क्या कीजिए. Thereafter, on 16th, the FIR was lodged. और उसमें एलिगेशन ये लगाया कि 15 की शाम को इनने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी. किसको? कंप्लेनेंट को. दिस इज द केस. जी. तो इसमें बताइए कैसे नहीं बनता प्राइमा फेसी SC/ST एक्ट के अंतर्गत केस? My lord, the FIR was made with the afterthought to save the skin of the complainant himself. अच्छा. He was snapping photographs of the minor girls. जी. Section 11(4) of complainant कौन है? Complainant Journalist photographers. Photographer. claiming himself to be a journalist. वो श्यामलाल सूर्यवंशी. उन्होंने FIR दर्ज करी है जी. उनने 15 तारीख को FIR कराई है. उसमें मैंने FIR की कॉपी फाइल की हुई है. मैं पढ़ देता हूँ. हाँ, पढ़िए प्लीज. ऑन पेज 25 मैं ग्राम बिछुआ का रहने वाला हूँ. राष्ट्रीय जजमेंट पत्रिका बोलता शब्द लाइव चैनल में पत्रकार हूँ. मेरे घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर शासकीय हाई स्कूल बिछुआ स्थित है, जिसके संबंध में हम लोगों ने शिकायत किया लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं हुई. आप समाचार में खबर चलवा दो जिससे शायद कोई कार्यवाही हो जाए. उक्त संबंध में आसपास रहने वाले कई लोगों द्वारा मुझे बताया गया कि शासकीय स्कूल में टीचर अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होते, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है. मैं इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 9/9/2022 को करीब 11 बजे हाई स्कूल बिछुआ गया और जाकर देखा. जब मैं स्कूल में बच्चों से बातचीत कर ही रहा था तभी स्कूल में पदस्थ शिक्षक शशि कपूर गौतम पीछे से आया और मुझे माँ बहन की गाली देकर मेरे साथ घूंसों से मारपीट करने लगा. ये मान लो 9/9 की घटना है पूरी, जैसा वो खुद बता रहा है. और बोला कि तू किस परमिशन से साला प्रांगण में आया है, बंद करो, मारो साले को. उसकी बातें सुनकर मैं स्कूल से बाहर आ गया. घटना को कमलेश कुमार गुप्ता ने देखा था. मैंने सोचा शिक्षा विभाग का मैटर है, मैं खबर चला दूंगा और विभाग कार्रवाई करेगा. नो कंप्लेंट वाज लॉज्ड बाय हिम इस सारे इंसिडेंट. किंतु दिनांक 15/9 जी
प्राइमा फेसी मेलाफाइट दिखाई दे रहा है। इनका क्या स्टेटस है कॉलेज स्कूल में घुसने का? तो वो ये कि जर्नलिस्ट है, बोले कंप्लेंट आई थी तो हम लोग इससे तो कहीं पर भी चले जाएंगे क्या? कवर करने गए थे तो कवर करने के लिए किसी की अनुमति लेनी पड़ती है कि विदाउट आ जाएगा? देखिएगा, श्री संतोष मिश्रा, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन seeking The anticipatory present applicants have also having criminal record below. Huh? 3 cases registered Present against applicant? three below. टीचर है ना ये तो? हाँ, फिर भी प्रिंसिपल है ना? 3 रिकॉर्ड है इनके। अलॉट प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर थे, सारे खत्म हो चुके हैं एज फार एज आई नो। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं कि खत्म हो चुके हैं, आप उनकी कॉपी पेश कर दीजिएगा ट्रायल कोर्ट में। माय लॉर्ड मैं एक बार और इंक्वायर कर लूं इस चीज को। इंक्वायर कर लीजिए आप। जी अभी कर लेता हूँ मैं। हम करके मुझे 2:15 बजे बताइए। जी जी बिल्कुल मैडम। मैडम नंबर 3 केसेस क्या एक बार दिखाइए इसके। ये सब लाई झगड़े 300 हैं? अब छोड़िए उसको, चलिए ये इतना ही। आईपीसी 294 341 304 506 279 337 338 353 332 294 534। Discharging his duties faithfully. Full stop. It is submitted that from the FIR it is evident that there was no prior acquaintance between the complainant and the present petitioner. Full stop. It is submitted that petitioner is a principal of high school, government high school, जी मैम। Bichua, Katni, Tehsil and District Katni. Incident allegedly took place on 9/9/2022, whereas FIR was lodged on 16/9/22. Full stop. Complainant is a journalist. It is a blackmailing tactics. His contention is, as made out from the FIR, that he had published some information. ये कौन से वाले पत्रकार हैं ये? और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जजमेंट मीडिया के हैं। He had screened, he had screened certain news on the TV, but when department did not took any action, he was forced to record present FIR. Full stop. With a view to lodge FIR, matters have been arbitrarily connected, showing that earlier incident took place on 9/9/22 when unauthorizedly complainant had entered the school premises, with some incident which took place on Bichua Mode on 15/9/2022. Full stop. It is pointed out that in the main incident which took place on 9/9/22, there are no allegations of making any casteist remark, but with a view to frame the applicant falsely, casteist remarks have been added as an afterthought on 15/9/2022. Full stop. Applicant is a government servant. He is a principal, and if anticipatory bail is not extended in his favor in terms of the law laid down by Supreme Court in Prithviraj Singh Chauhan versus Union of India and others, का citation दीजिएगा। Irreparable injury will be caused. मैंने citation पूछा, आपने ये दे दिया। माय लॉर्ड अभी देख के बता देता हूँ। इट इज रिपोर्टेड इन एससीसी। जी जी अभी बता देता हूँ। क्या देखा? Granted, then it will jeopardize his career for a false implication. Next, Shri Shiv Kumar Srivastava, learned government advocate, submits that there is a criminal history of 3 cases against the present applicant. Next. However, he admits that all the 3 cases are in relation to some property dispute and have no connection with the SCST Prevention of Atrocities Act.
Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record and also taking into consideration the law laid down by Supreme Court in Prithviraj Chauhan and the delay in FIR, if applicant surrenders before the concerned police station, then he be extended benefit of bail on furnishing personal bond or anticipatory proof. ये सब डाल दीजिएगा conditions. B क्या है 2.1 क्या है? 42 482 am I right for the quashing of charges. For 2.1 में लिखिएगा इशू नोटिस जवाब दे दीजिएगा. सर उसको जो आपने एडमिट करा दिया कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसको डिलीट कर दे सर मेरा सबमिशन आ गया अच्छा सर ठीक प्रॉपर्टी है इनका वो कर देना इनका डाल देना संतोष मिश्रा जी का that they are all property disputes in which applicant has been acquitted. चलिए 2.1 में इशू नोटिस कर दीजिए. Call for the record. Oblige me. Serial number 3, Shri Madan